So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss about Iran and the Iranian Revolution. Now, I have told you, in fact, yesterday we had discussed about the current Israel-Iran conflict. And I had told you that since Iran and Israel is very much in the news, so they can ask questions based on Iran also. Like they can go in the history of Iran. They can ask about the establishment, the correct establishment of Iran, etc. and all. And that is why I have decided to discuss one specific class for this. So let us begin. So if I'm audible, visible, please write yes. If everything is fine, please write yes in the comments. So first of all, those who have not watched this class, please go and watch it. This is very, very important, where I have discussed about US-Iran nuclear deal, what we call it as JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action. So ये आप देख लेना. Then अगर आपको ये नहीं मिले, so you subscribe to our channel, go to the live section. Live section में नीचे scroll down करना, and you will get this. ठीक है? Okay. Second, ये हम लोगों ने कल वीडियो बनाया था. Yesterday we had discussed this video, where I had discussed about Israel-Iran conflict. अगर आपने नहीं देखा, please watch it. This one very, very important. And इसमें मैंने last में homework दिया था. I gave some homework. Actually, I asked about IAEA. Okay, इस क्लास के कमेंट सेक्शन में कृषि सचदेवा एंड सामा यूब हैज आंसर्ड मी करेक्टली. सो IAEA हेडक्वार्टर इज इन वियना, ऑस्ट्रिया. ये याद रखना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और IAEA के डायरेक्टर जनरल इज राफेल मैरियानो ग्रॉसी, एस्टैब्लिश्ड इन 1957. ठीक है. एंड फिर मैंने ओपेक पूछा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का हेडक्वार्टर. ठीक है. सो दीस आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग. हेडक्वार्टर वियना, वेरी गुड, यू बोथ आर राइट. तो थोड़ा सा आप IAEA पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इट इज वेरी मच इन द न्यूज. लाइक यू शुड रीड अबाउट दिस. You should read about Eisenhower's Atoms for Peace speech था. इसी के रिजल्ट में बना था. US president Eisenhower was a US president. उनकी स्पीच Atoms for Peace speech, उनके रिजल्ट में IAEA बना था, है ना. हेडक्वार्टर आप देख लेना, डायरेक्टर जनरल वगैरह का नाम. ठीक है. So read something about IAEA because it has been in the news for the past few days. Okay, let's move on. So let us start with today's class about Iran. और आपने देखा होगा कि इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं. इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, सो व्हेन रशिया यूक्रेन वॉर वाज हैपनिंग, सो दे आस्क्ड अबाउट कि यूक्रेन वाज अर्लियर अ पार्ट ऑफ व्हिच कंट्री, यूक्रेन की करेंसी क्या है ना, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का प्रीवियस प्रोफेशन क्या है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड. सो ऑफ कोर्स इट मींस इफ लेट्स से ईरान इज इन द न्यूज, सो दे कैन आस्क इन डिटेल अबाउट ईरान, एंड दैट इज व्हाई आई एम हैविंग दिस क्लास. ठीक है. सो प्लीज रीड इट केयरफुली एंड देन आंसर मी. नो नीड टू बी इन अ हरी. तो आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 and 5. These are the 5 options. Name the water body that touches Iran. इससे पता चलेगा आपको ज्योग्राफी पता है कि नहीं. That is what the idea is. Caspian Sea, Persian Gulf, Gulf of Oman, Gulf of Aden. What is the right answer? तो कैस्पियन सी नॉर्थ में टच करता है, पर्शियन गल्फ टच करता है. ऑफ कोर्स पर्शियन गल्फ नाम ही है पर्शिया. अब इसको अरबियन गल्फ कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने, ना, ही हैज चेंज्ड द नेम. गल्फ ऑफ ओमान, yes, that also touches. Gulf of Aden does not touch. So the right answer is option 4. Yes, Kushagra, Harsh Sharma, flag football. Yes, you are right. Rishi Sachdeva, Harsh, Kushagra, you are right. So the right answer is option 4 is the right answer. A, B and C is the right answer to this question. स्पेसिफिकली ये क्यों बता रहे हैं, बिकॉज ये PYQ है. वो चाबहार पोर्ट पूछा था ना. सो चाबहार पोर्ट इज एक्चुअली नियर व्हाट, सो दैट दे मेंशन एक्चुअली द टर्म गल्फ ऑफ ओमान. ठीक है. सो ये एक तरह का PYQ में भी आ गया. सो लेट मी शो. सो ये ईरान है, ये तेहरान की कैपिटल. उसके ऊपर में जो ये वाला देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली कैस्पियन सी. ये छोटा सा दिख रहा है, बट इट इज क्वाइट बिग. हियर इट इज विजिबल ओनली अ स्मॉल पोर्शन. So this is Persian Gulf, or now Donald Trump has named it as Arabian Gulf. So of course Iran touches this. This is Gulf of Oman. ठीक है, ये भी टच करता है. और यहीं पर है आपको मिलेगा चाबहार पोर्ट. So चाबहार पोर्ट is actually in Gulf of Oman, है ना. और Gulf of Aden यहाँ पर है. Yes. Okay. एंड इसीलिए रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जो टच करता है, ये स्ट्रेट का नाम क्या है, किसी ने लिखा भी है. वेरी गुड. यस, कृषि सचदेवा, राइट. हाँ, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदब. एडन के पास होगा. आपको आपने सुना होगा
यहाँ पर एक पोर्ट है एडन, यमन का पोर्ट है एडन. इनफैक्ट दिस इज द प्लेस वेयर मिस्टर मुकेश अंबानी वाज बोर्न. आप उनके विकिपीडिया पेज में जाना, बिकॉज आई थिंक हिज फादर वर्कड देयर इन एडन. एक जमाने में काफी देयर वाज अ टाइम व्हेन एडन वाज अ वेरी फेमस पोर्ट, बट नाउ इट हैज डिक्लाइंड. ठीक है, सो गल्फ ऑफ एडन यहाँ है, तो ये ऑफ कोर्स इट हैज नो रिलेशन विद ईरान, इट डज नॉट टच ईरान. ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए. द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, A, B and C is the right answer to this question. ठीक है, ओके. नाउ administrative capital था. Let's move on to the next question. Please read it carefully and then answer me. This is how I'm checking your knowledge and your attentiveness, because this is very helpful in the examination hall. Please, again I'm saying, read the question carefully and then answer me. सबसे ध्यान से क्या पढ़ना है? Carefully. एग्जाम हॉल में भी ध्यान रखना, otherwise 1 or 2 silly mistakes will cost you a lot. You can take your time and answer. Don't be in a hurry. तो आपको आंसर ऐसे करना, 1 2, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, 5 लिखा है, ये लिखना है 1 2 3 4 5 में. I know it's a slightly difficult question, but there is a reason why I have given you. Let me see. Okay, I am giving you some more time. Now I am allowing you, go open the Google map or open whatever Google search you can do and then answer this question. चलो मैंने इतना भी time दे दिया. If you are having any other device, open it, or in your mobile or whatever it is, find out and then answer me. Because I am waiting for the right answer. आंसर बताइए, आंसर, करेक्ट आंसर 1 2 3 4 5 में. In the examination hall, what should be your answer? Yes, Adosh Anand has answered me correctly and Kushagra Saxena. The right answer is option 4. Krishi Sachdeva, आपने तो देखा, yes, does not have land border with Iran. आपने तो आंसर किया ही था, उसको आप बस बता देना था आंसर. ये सब का बॉर्डर है ईरान से. So the answer was D, 4, option 4, none of the above. And I gave this so that you will understand that Iran has border with so many countries, 7 countries. इस 7 कंट्री से ईरान का बॉर्डर है. और इसलिए मैं क्या बोल रहा था, केयरफुली. एग्जाम हॉल में दिस प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मैंने इतना तक कह दिया कि आप गूगल सर्च कर सकते हो. ठीक है, so when I told you that you can Google search, Google map search, then of course it would have been a very easy question. ठीक है, ऑप्शन 4. इसीलिए मैंने देखो यहाँ लिखा भी बॉर्डर्स ऑफ ईरान, और मैंने साफ लिख दिया था लैंड बॉर्डर भी, ताकि कोई बच्चा ये बोले सर वाटर से बॉर्डर टच करता है. So that's why I've explicitly mentioned. तो लैंड बॉर्डर का आप देखोगे, इराक, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान. और मैरीटाइम बॉर्डर्स में फिर कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान हो जाएगा. तो मैं दिखा देता हूँ. तो ईरान का किससे टच रहा है? तुर्कमेनिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, पाकिस्तान 3. ठीक है, फिर इराक 4, अजरबैजान 5, आर्मेनिया 6, टर्की 7. हो गया. तो वो कुवैत से नहीं टच करता है. That's why I'm highlighting it specifically. It does not touch Kuwait. Okay? अगर वाटर मैरीटाइम बॉर्डर कहा जाता है, आप कह सकते हो कि मैं पानी से कहां से टच करता, तो फिर यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, कतर, बहरीन, कतर, यूएई सब हो जाएगा, ओमान, सऊदी अरब. सो मैरीटाइम बॉर्डर जनरली पूछते हैं, लैंड बॉर्डर पूछते हैं कभी-कभी एग्जाम में. ठीक है, किसी एग्जाम में. So that is why you should know that these are the 7 countries with which Iran has border. Okay? और इनके बहुत सारे पहाड़ीज वगैरह भी, अगर आप चाहो तो
दस्ते काविर और दस्ते लूत, ये दोनों बहुत फेमस इनका ये है ना, डेजर्ट्स है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। सब पहाड़ी वगैरह नहीं पूछेंगे, कम चांस है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ईरान ने कल रात में ना यूएस के अल उदैद बेस पर अटैक किया था इन कतर, दैट वाज वेरी मच इन द न्यूज़। तो कतर यहाँ पर है, एंड कतर में देयर इज अ यूएस बेस। व्हाई ईरान हैज अटैक्ड? बिकॉज़ वन डे बिफोर दैट अमेरिका हैड अटैक्ड 3 न्यूक्लियर बेसेस, है ना, एंड दैट इज व्हाई इन रिस्पांस टू दैट दे हैड अटैक्ड अल उदैद बेस। अब क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रम्प का ये ट्रुथ सोशल पर दिस पोस्ट वाज गेटिंग वायरल दैट congratulations, he is actually talking about ceasefire, total ceasefire. Okay, so that is what he's talking about. God bless Iran, Israel, Middle East, USA. So he's claiming that the ceasefire is now done between Israel, Iran, and USA, etc. But now I need to check it. देखो इसमें वो सब चीज दिखा उन्होंने. You can read it. Iran will start the ceasefire, and upon the 12th hour, Israel will start the ceasefire upon 24th hour, etc. These are the things. If you are interested, you can read the entire post. But the thing is, has Iran accepted it? तो मैं इसको चेक कर रहा था बहुत जगह एक्चुअली, जैसे इसमें लिखा हुआ इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल थोड़ा देर पहले मैं इन द मॉर्निंग आई वाज सीइंग, उसमें लिख रहा है कि says Iran state TV ceasefire has begun, but I've checked it. पहली बात तो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि there is no agreement regarding ceasefire. That is what he has said. So I went to the official website of Press TV. अगर आप गूगल पे जाना सर्च करना Press TV, presstv.ir करके. So I searched. This is the just 10-15 minutes before the class. This is a screenshot of Press TV. I could not find anywhere on the top written that the ceasefire has been done. Because if ceasefire would have been done, it was somewhere on the top. लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है. Okay. Then I went to the Jerusalem Post. But here someone Netanyahu says Israel agreed to ceasefire with Iran after achieving all war goals. तो यहाँ पे दिख रहा है. This is the Israel's newspaper. And here actually respond forcibly CLAT claims ceasefire violation. So they are saying that Iran has done ceasefire violation. But in the official website with Press TV, which is an official website of Iran, I could not find any such things. Then I went to the Washington Post just before the class. तो ये लिखा हुआ है Israel Iran inter ceasefire amid claims of violation. So that is what Washington Post US से छपता है, ठीक है. तो ये these are the different news. फिर मैंने I went to the Iran's foreign minister's Twitter account. तो उसमें ये लिखा था as Iran has repeatedly made clear Israel launched war on Iran, not the other way around. So there is no agreement. ये है 6:16 AM 24 जून का. So 24 जून में था आज सुबह 6:16 का. Okay, it means he's saying that we have not done any ceasefire or any agreement. अभी तक तो ये समझ में आ रहा है, हो सकता है थोड़ा देर बाद आ जाए. फिर इसके बाद देखो 24 जून का 10:38 AM में डोनाल्ड ट्रम्प का ceasefire is now in effect, please do not violate it. So we are not able to understand कि which version is correct. I mean कौन सी वाली बात सही, कुछ कहीं पे आ रहा ceasefire हुआ है कहीं नहीं हुआ. So let us wait for that. Okay. So now please answer this question. Yes, Tehran. और इसका आंसर बताओ. ये पूछते हैं. Tehran everyone knows, but this will be asked. Operation Herald of Victory. I'm not sure about the operation name. Operation name भी इसका है क्या? कतर पे अटैक का, मतलब US बेस का. Herald of Victory. Let me check. Yes, Operation Herald of Victory, right? Yes, you're right. हाँ, the right answer is option B, Real. Yes, you are right. ये इसका जो है मैं लिख देता हूँ, ठीक है. Thanks for giving additional knowledge, है ना. Operation Herald. Let me check the spelling. Herald of Victory. Herald of Victory. This is the name of the operation. और ये बेस का नाम क्या है? अल उदैद बेस. So please remember that. ठीक है. हाँ, करेंसी में बात करें, रियाल इज द करेंसी, ठीक है. So B is the right answer to this question, है ना. Iranian रियाल, ये आपको याद होना चाहिए. Let's move on further. What was the name or old name of Iran? ईरान से रिलेटेड हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे.
Mesopotamia, Sumeria, Babylonia, Persia. यस पर्शिया है ना, ये सब इराक का नाम था, इराक से इसका रिलेशन है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन, बैबिलोनिया, हैंगिंग गार्डन ऑफ बैबिलोनिया आपने सुना होगा। दीज ऑल आर लिंक्ड विद द हिस्ट्री ऑफ इराक। हाँ, प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम भी होता था ना शायद। In my childhood, I remember Prince of Persia. This is the right answer. Yes. तो अगर आप सोमेरियन सिविलाइजेशन वगैरह सर्च करो, सब ये इराक से रिलेटेड। आई थिंक क्लास 11th या 12th की हिस्ट्री बुक में पढ़ाया जाता भी है ना। मेसोपोटामिया एंड टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स आर टू फेमस रिवर्स। उरुक एक बहुत फेमस सिटी है। अभी भी एक गेम है प्रिंस ऑफ पर्शिया, इट एग्जिस्ट टुडे। आई डोंट नो, लाइक व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले। आपका तो हमको पता नहीं। ठीक है, सो दिस इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यहाँ होता था इन इराक। और ईरान का जो ओल्ड नेम है वो पर्शिया था, है ना। सो एंड द लैंग्वेज यूज्ड इज पर्शियन लैंग्वेज, है ना। अच्छा, यहाँ से एक रिलीजन ओरिजिनेट हुआ है, वेरी फेमस रिलीजन ओरिजिनेटेड फ्रॉम हियर। व्हाट इज दैट कॉल्ड? को बता सकता है? इवन a lot of Indians are also from this religion. हाँ, पर्शियन लैंग्वेज को फारसी लिखते हैं, राइट। ईरान का ओल्ड नेम पर्शिया है। यहाँ की एक लैंग्वेज उसको कहते हैं पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज और फारसी। सो इवन इंडिया की भी ऑफिशियल लैंग्वेज थी 1877 से पहले। हाँ, Zoroastrianism, yes, very good. Kushagra and fourth flash football. Aryan, you are right. Zoroastrianism is the religion. Zoroastrianism. And इनको जो है शॉर्ट में पारसी लिखते हैं, पारसीज। वही पर्शियन सी वर्ड है, पारसीज। लाइक रतन टाटा वाज पारसी, फ्रॉम पारसी रिलीजन। ठीक है, साइरस मिस्ट्री। इवन अ वेरी फेमस सुप्रीम कोर्ट लॉयर who died I think last year, उनका नाम बता सकते हो? He is also Parsi, very famous Supreme Court lawyer. His son was also a Supreme Court judge from Parsi origin, Parsi religion. Jait Malani? No. Geo-Parsi scheme, government scheme, right? Huh? So his name is Fali S. Nariman. There is a Nariman point in Mumbai by his father's name, I think. Fali S. Nariman. Very famous lawyer from India. He died, I think, last year. Last year उनकी death हुई थी. And his son was also a Supreme Court judge. He also retired. और ये 90s के आसपास में रिटायर किए थे। बहुत फेमस नाम है। Fali S. Nariman is a very prominent name in the legal fraternity. Fali S. Nariman हो गए, नानी पाल केवाला हो गए. These are very prominent names. ठीक है। तो कुछ एम्पायर्स थे पर्शियन इससे रिलेटेड। पर्शियन एम्पायर जैसे अकेमेनिड एम्पायर था 550 बीसी में। जस्ट रफ आइडिया होना चाहिए, है ना। साइरस द ग्रेट वगैरह यहीं से होते थे। सो दे ऑल वेयर फ्रॉम देयर। ठीक है, सो जस्ट आई एम गिविंग अ रफ आइडिया अबाउट इट। हाँ, आप देख सकते हो, है ना। तो ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, व्हिच इज एक्चुअली कॉल्ड एज, है ना। अच्छा, इनकी ऑफिशियल बुक है, उसको कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन की, है ना। ईरानियन रिलीजन ज़ेन अवेस्ता, ज़ेन अवेस्ता ऐसे पूरा लिखते हैं। ठीक है, और इनके गॉड को शायद अहुरा माजदा लिखते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एंड एक्चुअली द prophet is actually, his name is Zoroaster, who was the prophet or the founder of this religion, Zoroastrianism. Okay, जिनको मतलब normally हम लोग पारसीज कहते हैं, पारसी। So this is nothing but Zoroastrian religion. Okay, that is what you should know. Okay, the next question is what is the current status of Iran? हाँ, ज़ेन अवेस्ता, राइट। कोशाग्रा, झोले लाई, आई डोंट नो। क्रेसी सचदेवा, झोले लाल, आई डोंट नो। जो आप पूछ रहे हो हम नहीं जानते। हाँ, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ ईरान? इलेक्टेड प्रेसिडेंट बट विद अ थियोक्रेटिक सुप्रीम लीडर, है ना। मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड थियोक्रेसी, है ना। दैट इज व्हाट यू शुड से। प्योरली थियोक्रेटिक भी नहीं कहा जाएगा बिकॉज़ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट हैपेंस फॉर प्रेसिडेंट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एग्जांपल बता सकते हो? वो कंट्री कौन सा है? एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की।
अच्छा इंडिया कहाँ पे सेट होगा इन चारों में? वेयर विल इंडिया लाई? हाँ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की यूके, वेरी गुड, गुड फ्लैश फुटबॉल। जापान, हाँ मेरे ख्याल से जापान भी होगा as far as I could understand, हाँ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हाँ इंडिया इससे रिलेटेड होगा, ऑप्शन डी से। सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इट इज रिटन इन प्रीएम्बल, है ना? सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंडिया यहाँ पे आएगा डी में, ठीक है। सो हियर ईरान द आंसर इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बट विद अ थियोक्रेटिक सुप्रीम लीडर, सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छा सुप्रीम लीडर को कौन सा टर्म यूज करते हैं? दिस इज द इंग्लिश वर्ड यूज्ड, बट व्हाट इज द पर्शियन नेम और अरबिक टर्म यूज्ड फॉर दैट इन ईरान? कोई बता सकता है? There's a supreme leader is an English word, leader Islamic revolution, आयतुल्लाह लिखते हैं, ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा बट यू शुड नो इट, ठीक है। सो रहबरी मुअज्जम कहाँ देखिए, आयतुल्लाह टर्म लिखते हैं, ओके। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ज़ोरास्ट्र, है ना? ज़ोरास्ट्र वाज द फाउंडर ऑफ ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, है ना? ये थोड़ा सा के बात पढ़ लीजिए। और इनका 6th-7th सेंचुरी के बीसी के आसपास ही वाज देयर, कंटेम्परेरी ऑफ साइरस द ग्रेट, ठीक है। नाउ ये मैंने बताया सुप्रीम लीडर करंटली इज अली खामेनी एंड द प्रेसिडेंट इज मसूद पेजेश्कियान, ठीक है। बाकी सब इतना नहीं जाना, बट ये दोनों बताना चाहिए। एंड देखो द राइट वन इज अ प्रेसिडेंट, है ना? 9th president of Iran, and since Iranian Revolution, and is the 2nd supreme leader of Iran, है ना? So Grand Ayatollah लिखते, Ali Khamenei is actually, देखो Ali Khomeini नहीं है, he is Ali Khamenei, he is actually the current supreme leader since 6th August 1989. Now please tell me if there is a disagreement between the two, who should be have final say? फाइनल से किसका होगा? हाँ सुप्रीम लीडर का। अच्छा किसी ने लिखा था रहबरी मुअज्जम, वो भी सही है एक्चुअली, someone wrote it in comment section. रहबरी मुअज्जम is actually the Persian translation of supreme leader, he is also right, he or she जिसने भी लिखा था, ठीक है। इनकम्बेंट का मतलब करंट, वो उस पोजीशन पे अभी है, दैट मींस इनकम्बेंट, ठीक है। हाँ सो ही विल बी मोर पावरफुल, सो सुप्रीम लीडर इज मोर पावरफुल। तो ये इनका इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हैपेंस, प्रेसिडेंट इलेक्शन हैपेंस, द पीपल कम एंड वोट। और इनका जो होता है वो इलेक्शन नहीं होता, एक तरह से नॉमिनेशन होता है, फ्यू पीपल, few religious leaders decide who should be the next supreme leader, like that. Generally the person who is outgoing one, he actually names the successor. तो आपने देखा होगा he has named the 3 successor also, that if he will die then this should be the next supreme leader, then the next, like that, है ना? So generally it is decided by few people together in a council, ठीक है। but election जो होता है राइट साइड वाले का, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, complete election where people come and vote, that is how it is, okay। name the Iranian president who died in helicopter crash last year, very important, very famous, बताओ। What is the answer? Iranian president who died in helicopter crash last year. I'm not giving option because I believe you should be knowing. भूल गए, इब्राहिम रियासी, यस, है ना? इनके देखो इनका प्रीवियस सक्सेसर था इब्राहिम रियासी, he died 19th May 2024, है ना? in helicopter crash last year. Okay, इनका काफी न्यूज में नाम था, that is what you should be knowing, ठीक है। इब्राहिम रियासी और राइसी, रईसी होगा, देखा, इब्राहिम रईसी, ओके।
है ना। और ये भी आपको पता होगा कि ईरान इज मेजॉरिटी 90 to 95% शिया मुस्लिम्स एंड 5 to 10% सुन्नी मुस्लिम्स आर देयर। ये पता होना चाहिए बिकॉज मे बी दे कैन आस्क। एंड 8% ज़ोरास्ट्रियन है, ठीक है, 1.5% क्रिश्चियंस वगैरह भी। दैट्स व्हाट यू शुड। फाइन, ओके। The next one is which of the following is not a part of axis of resistance led by Iran? मैंने आपको बताया axis of resistance पढ़ने के लिए। In fact, I remember I taught in the paid classes. और not है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, Shia and Sunni are two prominent sects in among Muslims, right? The right answer is D. Taliban is not a part of it. मैंने आपको बताया था पढ़ने के लिए Hezbollah. Okay, let me change the color of the pen. So Hezbollah is there, Hamas is there, Houthis are there, and Iran. और भी बहुत सारे लोग हैं. So all Hamas is Sunni, but the other ones are Shias. Hezbollah is Shia, then Houthis are also Shia. All are supported. Houthis are based in Yemen, backed by Iran. Okay, so these are the things. These are prominent ones I have highlighted. Hezbollah is based in Lebanon. Hamas is based in Gaza. Okay, that is what you should know. वैसे I have discussed about Iran, Houthi, Hezbollah, Hamas here also in detail. You can watch it. They have shown Afghanistan in photo also. अच्छा ये वाला Hezbollah Afghanistan is there. Even I was not knowing that there is something called as Hezbollah Afghanistan, but okay. ठीक है, let's move on, है ना। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा axis of resistance. Iranian Revolution took place. So because the current setup of the governance with having a president plus a religious leader or the supreme leader, this current setup is after this Iranian Revolution. Before the Iranian Revolution, there was a kingship, a dynasty was ruling. What is that? Yes, 1979 is the right answer. Very good. And who was the first supreme leader? Because Ali Khamenei is the second supreme leader, है ना? Was instrumental in 1979 Iranian Revolution. So जैसे अभी मैंने इनको दिखाया ना, आप यहाँ देखो, he is Grand Ayatollah Ali Khamenei. He is the second supreme leader. नीचे लिखा है, he is the second supreme leader since 1989. So before him there was first supreme leader or who brought, or first Ayatollah who brought the Iranian Revolution. हाँ, इनका नाम है Khomeini. देखो नाम is very similar. That is why you have to be very cautious. Ruhollah Khomeini या Ayatollah Khomeini लिखते हैं बस. Ruhollah नहीं लिखेंगे, बस लिखेंगे Ayatollah Khomeini. So बस वो Khamenei और Khomeini में there's a slight difference. So he was the first supreme leader and he brought the Islamic Republic of Iran, means the revolution in Iran in 1979 till his death in 1989. He was the supreme leader of Ayatollah. Okay. Then in 1989, since 1999, we are having second Iran supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. And since then, he is actually the supreme leader. Okay. So मैं आपको पता होना चाहिए. अच्छा, can anyone tell me his grandfather, I think, has some relation with India? तो ये इनके सक्सेसर अली खामनी हो गए, ठीक है। हाँ, इन टॉपिक्स पर बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है. So please tell me, his grandfather lived in India, one city in Uttar Pradesh. What is that city? His grandfather was born in a city very near to Lucknow. इतना मैंने बता दिया. ये काफी न्यूज में आ रहा था. Those who are aware. Ayatollah Ruhollah Musawi Khomeini, Ayatollah Khomeini's, who ignited 1979 revolution, had its root in Kintur in Barabanki district, 50 kilometers from Lucknow. Lucknow से बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का नाम है. ओके, नहीं, नॉट शौकत अली से उनका रिलेशन नहीं. देखो ये सब न्यूज आ रही थी. हाउ ए बॉय फ्रॉम बाराबंकी चेंज द कोर्स ऑफ ईरान हिस्ट्री. ये अभी न्यूज में आ रही है, 1979 रेवोल्यूशन. ओके, हिज तो सैयद अहमद मुसावी हिंदी, his grandson was actually Ayatollah Khomeini, the person who brought the revolution in 1979, and who went from to Iran from Barabanki in Uttar Pradesh. Okay, ये भी पूछ सकते हैं, because I have seen they go in detail, go in the past. Israel-Iran conflict चल रहा है, they will ask about Iran revolution. ऐसे जाते हैं वो past में. अब आप सोचोगे ये क्या पूछ दिया. So of course they ask. I cannot help, but of course they are asking these types of in detail question, है ना. और अहमद हिंदी की जो फादर थे, he had migrated from central Iran to India, and then again they actually went back again, है ना. So that is what you should know. So लखनऊ के पास जगह है किंतूर विलेज, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट, बाराबंकी में.
Gintur village is there near Lucknow. So of course you should be knowing these terms. ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे क्या इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं. Forgotten Indian roots of Ayatollah Khomeini, देखो ये सब न्यूज. India Today, Times of India, Indian Express, Telegraph. मेरे दादा बताते हैं कि मम्मी पापा उनको ही लिखते थे. Yes, Krishi Sachdeva, because before 1837 India's official language was also Persian, है ना? Perhaps that is the reason. हाँ, ठीक है. सो बाराबंकी, तो ये लखनऊ के पास है बाराबंकी. यहाँ पर ये लखनऊ है, इसके जस्ट ईस्ट में बाराबंकी. Okay, the next question is this. What is the name of the parliament of Iran? ये भी पूछ सकते हैं. मजलिस, मुतवल्ली, उलेमा, मशवरा. Let me see. मैंने कल बताया ये. Yesterday I told you. Yesterday या Saturday वाली द हिंदू एनालिसिस में बताया था. हमको जहाँ तक याद आ रहा है. Saturday क्लास में. As far as I could remember. मजलिस is the right answer. Yes, कृषि सचदेवा and कोशाग्र संसेना, you both right. मजलिस मतलब होता है जहाँ पे सारे लोग आके बैठते हैं. Yes, मुतवल्ली is the one who holds, is related with वक्फ. Yes, very good. So मुतवल्ली जो होता है, मैंने आपको बताया भी था, चूंकि वक्फ भी काफी न्यूज में. वक्फ का मतलब होता है डोनेटेड लैंड, है ना? वक्फ बिल्स एटसेट्रा वाज इन द न्यूज. तो मुतवल्ली जो होता है, फॉर एग्जांपल someone has donated this land for वक्फ, for let's say building a mosque. Okay, यहाँ पे एक मॉस्क बन गई. So इस मॉस्क का जो देखभाल करेंगे, यानी रेगुलेट करेंगे, दैट्स कॉल्ड एज मुतवल्ली. ओके, उलेमा इज रिलीजियस लीडर. हाँ, ये जो है जामिया के एग्जाम में पूछता है, मैंने देखा. इफ यू आर अटेम्प्टिंग जामिया एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. सो देखो, एक वर्ड होता है इल्म. इल्म मींस नॉलेज. बता देता हूं थोड़ा सा. सो आलिम मींस अ पर्सन, अ स्कॉलर. Once he was having huge knowledge, good knowledge. ठीक है. और उलेमा is its plural. So उलेमा is plural of alim. ठीक है. That is what you should know. मशवरा का मतलब कंसल्टेशन होता है. आसियान कंट्रीज में भी ये टर्म यूज करते हैं, मशवरा, कंसल्टेशन. Someone is asking, sir, जिल्ले इलाही का मतलब किंग. हाँ, जिल्ले इलाही was the term used actually by Balban etc. and I think तो वो किंग के कंटेक्स्ट में कहा जाता था कि जिल्ले इलाही एक्चुअली इज टेक्निकली मींस कि शैडो ऑफ गॉड उस सेंस में. सो दे रिफ्लेक्ट द किंगशिप वगैरह यूज किया था वो टर्म. ठीक है. द राइट आंसर है इज ए, मजलिस. और अगर आप देखोगे तो इनके जो टर्म लिखा है मजलिस शूरा इस्लामिया, अगर शूरा भी लिखा है तो भी सही होगा. अगर कहीं पे लिखा है शूरा भी मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल. ये मजलिस लिखा क्या, मजलिस शूरा इस्लामी, मतलब मजलिस शूरा is actually the unicameral one house legislature of Iran. ठीक है. Tomorrow we will discuss about Israel. ठीक है, because of course Israel is also in the news. Okay, the next is, what is the name of the dynasty that was ruling before the revolution of 1979? उस डायनेस्टी का नाम बताइए. हाँ, yes, Krishi Sachdeva, you are right about Balban. हाँ. Name of dynasty that was ruling Iran before revolution of 1979. Yes, very good. Pahlavi dynasty. अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा कोई बता सकता है? सफाविद डायनेस्टी, लिटिल बिट एनी? हाँ, Raza Shah was deposed. Safavid dynasty, a very famous Indian king, got he had to come out of exile. He had to leave India, and he got shelter under Safavid dynasty. Which king is being talked about? Very famous. A very famous Indian king had to leave India and settle in Iran for a few years because he was very much fearful. Yes, Humayun, very good. Krishi Sachdeva, you're right. In fact, the Shia Islam was brought by Safavid dynasty in Iran. So primarily, है ना? So the right answer here is B. Pahlavi dynasty is the right answer. नहीं, बहादुर शाह जफर को तो म्यांमार ले जाया गया था. हाँ, he ran because of Sher Shah Suri, right? हाँ. So इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना? Humayun did seek refuge in Safavid dynasty after getting defeated from Sher Shah Suri in Battle of Chausa, Kannauj, etc. ठीक है, ये काफी फेमस है.
एंड हाँ ये मैंने बताया था. सो somewhere here was Sher Shah Suri's empire and based in Bihar, etc. And because of which he had to run away to Iran. And Pahlavi dynasty, अब देख सकते हो 1979 revolution, it was removed. And 1925 से 1979 तक रहा था. And he was the last ruler, Muhammad Reza Pahlavi, and he had to run away because, of course, when revolution happens, you have to leave your country, otherwise you will be killed. So he had to run away. He went to he had gone for exile. So Egypt, then Morocco, then Bahamas, Mexico, then went to US, Panama, then back to Egypt. So primarily he was given support by Anwar Sadat from Egypt. That is what you should be knowing. ठीक है ना. आप देख सकते हो. ये मोहम्मद रज़ा पहलवी, even his descendant is still there. He is living in exile. And why I'm discussing it? Because he was in the news. Prince Raza Pahlavi, abhi he is alive, incumbent. आप देख सकते हो है ना. And he gave this statement: step down, you will get a fair trial. Exiled Iranian crown prince to Khamenei amid tension with Israel. तो लिखा ना, Paris is in Paris, from the same descendant family, is living in Paris. And he is, of course, since his grandfather was removed by the 1979 revolution, of course, he will not be happy with the current government. Okay. Anwar Sadat was attacked after Camp David Accord, right? Koshagra. Yes. Okay. Now let's talk something about Iran, because we have seen in the CLAT in the previous year questions, they ask from Wikipedia pages. जो first में Wikipedia page पे लिखा होता है, वहां से सवाल उठाते हैं. So first देखो ये flag है इनका, ऐसा दिखता है. ठीक है. Islamic Republic of Iran, they call it. ठीक है. और उसके बाद और क्या पूछ सकते हैं? Emblem है. Okay. So this is an emblem which is written Allah. Okay, in Arabic. In Iran ranks 17th globally in geography and size. ठीक है. 6th largest country in Asia. और क्या पूछ सकते हैं? Tehran is the capital. So these are the terms that can be asked. Then इसमें past में Cyrus the Great from Achaemenid Empire was there. Past कुछ important. Even Alexander the Great also had captured this region. And a Parthian Empire, Sassanid Empire हुआ करता था. Zoroastrian religion is actually from there. ठीक है. So these are prominent things. And Muslims conquered Iran in 7th century, in 600 something AD में. Okay, that is what you should be knowing about. So उसके बाद then actually Islam became the prominent religion in Iran. Okay, so these are the famous terms. फिर 16th century में Safavid dynasty came and it re-established Iranian state with 12 Shia Iran. देखो major जो Shias होते हैं mostly they are actually 12 Shia Islam. 12 क्या होता है इतना डिटेल आपको नहीं जाना, because I don't think they'll be asking. Just remember it. That Safavid dynasty actually brought Shia Islam in, became more prominent after that. Okay, that is what you should know. But Islam came in 7th century in Iran, but in Safavid dynasty, the 12 Shia Islam became more prominent in 16th century. Okay, और इसमें क्या जानने को है? हाँ, 1980. Yes, ये थोड़ा सा important है. Iraq invaded Iran, led by Saddam Hussein, and it became an Iran-Iraq war of 8 years. ये भी काफी फेमस हुआ था. Just 1 year later after the Iranian Revolution. Was the Shia Islam established by Prophet Muhammad? Krishi Sasdeva, the religion that was established by Prophet Muhammad was Islam. Later on, it got actually a little bit. The two sects were made, Shias and Sunnis. He did not make as such Shia or Sunni Islam. Okay, that's what you should know. So 1980s Iraq invaded Iran, है ना. ये थोड़ा सा पता होना चाहिए. That is what you should know. Then कुछ और चीजें पता होना चाहिए. That it is having the largest fossil fuels, world's second largest natural gas supply, third largest proven oil reserve. ये सब पूछ सकते हैं. Okay. Then Iran is a founding member of UN, OIC and OPEC. ये दोनों important है. OIC and OPEC. These two are important. ठीक है. तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. These are countries who are majorly having the petroleum exporting power. ठीक है. Established in 1960 in Baghdad by first 5 members: Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Venezuela. है ना. आपको पता है Venezuela is having the largest oil reserve, etc. ठीक है. तो ये लोग मिलकर के establish किए थे. आप देख सकते हो. जो डार्क ब्लू कंट्रीज है वो OPEC कंट्री है. जैसे ईरान हो गया, है ना, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया. ठीक है. दिस इज वेनेजुला. फिर लाइट ब्लू में OPEC प्लस है. देयर आर अदर कंट्रीज आल्सो, जैसे रशिया हो गया,
ये कजाकिस्तान हो गया, these are light blue, ब्राजील हो गया, मैक्सिको हो गया, ठीक है, that is what you should know. तो ये मैक्सिको हो गया, okay, so ये आपको बताना चाहिए. So the headquarters in Vienna, Austria. So OPEC countries और OPEC plus countries आप देख लेना. सारे कंट्रीज का नाम याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, बट एक रफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है. हाँ, ब्राजील रिसेंटली एडेड. फिर एक OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन. सो दीज आर ग्रुपिंग ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, 57 मुस्लिम कंट्रीज है ना, 57 मेंबर स्टेट्स, 40 ऑफ व्हिच आर मुस्लिम मेजॉरिटी, 48 उसमें से मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है. तो आप देख सकते हो जो ग्रीन वन से वो मेंबर स्टेट्स है और ब्लू वन से ऑब्जर्वर है. सो आप देख सकते हो ये अरब रीजन, फिर नॉर्थ अफ्रीका इज आल्सो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, तो यहाँ पर इंडोनेशिया है. हाँ, अरब लीग और OIC इज डिफरेंट, ठीक है, ओके. सो यहाँ पे सोमालिया हो गया, दीज आर द कंट्रीज. ये तो रशिया है, तो रशिया इज नॉट अ मुस्लिम नेशन, सो ये ऑब्जर्वर में आ जाते हैं. एंड देयर हेडक्वार्टर्स इन जद्दा. सो OIC का जो हेडक्वार्टर है वो जद्दा में, ध्यान रखिएगा. लेकिन ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है ना, ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है, IAEA का भी हेडक्वार्टर वियना में है. दीस आर इन द न्यूज़, दैट्स व्हाई आई एम हाइलाइटिंग, ठीक है. ज्वाइन नहीं किया, ये है ऑब्जर्वर है. Observer means you can come, participate, talk, discuss, but you cannot vote. ठीक है, डिस्कशन वगैरह कर सकते हो, अपनी राय दे सकते हो ऑब्जर्वर में. मेंबर्स में जब भी वोटिंग होगा तो मेंबर्स कैन वोट, ठीक है. सो दैट्स द डिफरेंस. इवन दो यहाँ पे थाईलैंड है, ये भी मेंबर है, मतलब ऑब्जर्वर है, ब्लू सा है ना. ये वाला मेरे ख्याल से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, दिस इज आल्सो अ मेंबर, सॉरी ऑब्जर्वर, ठीक है. अच्छा, एक और चीज होता है, दिस आई एम आल्सो डिस्कसिंग बिकॉज़ ऑफ कोर्स दे कैन आस्क इट. इसको कहते हैं नवरोज. पर्शियन फेस्टिवल है, न्यू ईयर फेस्टिवल. नवरोज का मतलब ये होता है पर्शियन में न्यू ईयर. एंड व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट, बिकॉज़ इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया आल्सो. एंड इंडिया के यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में भी इसका ये नाम है, इंटैंजिबल यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, इंडिया के लिस्ट में इसका नाम है नवरोज. सो इन इंडियन पार्सीज एक्चुअली दे डू सेलिब्रेट नवरोज, ठीक है. एंड दिस इज ओरिजिनली फ्रॉम ईरान है ना. सो दैट इज व्हाई मे बी दे कैन आस्क, ठीक है. सो आई ट्राइड माय बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. एक दो और चीजें वो भी मैं बता देता हूं. देयर आर सम प्रपोज्ड पाइपलाइंस, उसको कहते हैं तापी. सुना है नाम कभी? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन. तो ये फजलिका है, से मुल्तान होके कोयटा, कंदहार, हेरात से होके जाएगा. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब देख लो, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है. तुर्कमेनिस्तान में गैलकिश, ये ऑयल फील्ड है, नेचुरल गैस बहुत होता है ना, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ नेचुरल गैस, ओके. एक तो ये तापी है, फजलिका पंजाब में एक जगह, दैट इज वन प्रपोज्ड गैस पाइपलाइन, ओके. But of course, the first thing is there's a Pakistan, so we are not sure whether this will be successful or not. Similar to that, ईरान का जो रिलेशन में IPI पाइपलाइन का एक प्रपोजल है, जैसे न्यू दिल्ली से जाएगा है ना पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ईरान, तो बंदर अब्बास पोर्ट, ईरान शहर, जो रेड वन है, दिस इज कॉल्ड एज IPI पाइपलाइन. दीज आर प्रपोज्ड पाइपलाइंस, ठीक है. और उसका एक हिस्सा जो ग्रीन से निकल के जाएगा, जो ग्रीन वाला है तापी है, देख लो, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया. जो रेड वाला ये IPI है, इंडिया पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन. व्हाई? बिकॉज ईरान के पास नेचुरल गैस है. अगर पाकिस्तान इज कोऑपरेटिव, इफ पाकिस्तान वुड हैव बीन कोऑपरेटिव, दिस वुड हैव बीन सक्सेसफुल, कि यहाँ से अपना आराम से गैस चलाता है, मुल्तान होके फर्स्ट न्यू दिल्ली, ओके. और ग्रीन वाला जो तापी है, बिकॉज तुर्कमेनिस्तान के पास काफी नेचुरल गैस है. बट इट रिमेन्स अ ड्रीम परहैप्स, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नीड द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, व्हिच इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ. इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज पूछ रहे हो. अच्छा, एक होता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना, इंटैंजिबल में तो उसको टच नहीं किया सकता है. जैसे कोई फेस्टिवल है, जैसे दुर्गा पूजा वाज आल्सो एडेड हियर है ना. देन देयर आर अदर फेस्टिवल्स जिसको आप टच नहीं कर सकते. डांस हो गया, कल्चर इवेंट हो गया, दैट इज इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है ना. दैट इज व्हाट यू शुड नो, ठीक है. नवरोज में, okay. So this is all about today's class. Tomorrow I'll be meeting you with Israel topic, because of course there can be question from Israel also, so we'll be discussing that in detail. अच्छा, एक क्वेश्चन है होमवर्क, ठीक है. आप लोग पढ़ के आइएगा, बिकॉज आई वांट यू ऑल टू नो, और ये एग्जाम से ये रिलेटेड भी हो सकता है. आपको आंसर करना है, पहले लिखना है नीचे कमेंट में, आफ्टर द क्लास इज ओवर, अब्राहमिक रिलीजन कौन कौन से रिलीजन होते हैं, अब्राहमिक रिलीजन, ठीक है. सेकेंड थिंग इज
लेवांट कौन से रीजन को कहते हैं? Which region is called as Levant in geography? So these two are homework. Go and find out and write it in the comment section because this will be helpful in the next class. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.